Good morning, children. Today we will understand what is Born-Haber cycle. Okay. So when NaCl solid is formed, it is formed of Na plus ion and Cl minus ion. Energy is released. Why? When stability will be more, when energy will be less. ध्यान में रखना है, एनर्जी लेस होगी तो स्टेबिलिटी होगी. बट इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है that is known as lattice energy. So there is no direct method to determine the lattice energy, but one indirect method is there that we will understand today, that is Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is the indirect method of calculation of lattice energy. So here one example is explained. Sodium solid plus half Cl2 gaseous is giving us NaCl. Let us understand how, and in this we will also use Hess law of constant heat summation. Hess law क्या था बेटा? स्टेप्स में अगर रिएक्शन होते हैं तो उन सब की एनर्जी को टोटल करके जो एनर्जी होती है दैट वाज गिवन बाय हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. नाउ वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आई सेड यू नो एंथैल्पी और एफ लगा दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट. राइट. सो Born-Haber साइकिल में क्या करना है कि सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस इज इक्वल टू NaCl सॉलिड. बट यू नो Na हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू Na प्लस आयन, और Na प्लस आयन के लिए क्या होगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? वी हैव रेड इट इन थर्ड लेसन. आयनाइजेशन एनर्जी. What is ionization energy? The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. The energy required to remove an electron from a neutral gaseous एटम. ठीक है, आइसोलेटेड लगाना जरूरी है. फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम. बट हमारा Na तो सॉलिड है, तो सॉलिड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू आयन. तो क्या करना पड़ेगा? पहले सॉलिड से तो गैस बनाना पड़ेगा. गैस से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो सोडियम आयन बनेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोडियम इज सॉलिड. सोडियम क्या है? सॉलिड है, मेटल है. सोडियम इज सॉलिड, बट टू मेक एन आयन फ्रॉम सोडियम सॉलिड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस. सो वी विल राइट हियर सोडियम. So sodium will be converted into sodium. This is solid. Gas. So some सॉलिड से गैस कब बनता है बेटा? सब्लिमेशन एनर्जी. सबलाइम करेगा. सॉलिड से डायरेक्ट गैस कब बनता है? सबलाइम करेगा, सब्लिमेशन. सो हियर वी विल राइट सब्लिमेशन एनर्जी. मेरी बात समझ में आई सबको? सॉलिड से डायरेक्ट गैस कब बनता है? व्हेन सब्लिमेशन एनर्जी इज प्रोवाइड, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉलिड डायरेक्ट टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन. So, and now this sodium gas has to be converted into sodium ion, Na plus ion. So gaseous atom से आयनाइज करने के लिए कोई एनर्जी देनी पड़ेगी. That energy is ionization energy. Ionization energy. Clear? Now this has become sodium ion. कैसा sodium ion? Gaseous form में, right? Now second side में हमारे पास क्या है? हाफ Cl2, Na plus half Cl2. Cl2 is already in gaseous form, क्लोरीन तो गैस ही है, बट हमें 1 Cl चाहिए. सो देर इज ए बॉन्ड बिटवीन Cl एंड Cl. सो Cl bond is there. Should I write here? Cl bond. To break the bond dissociation energy is needed, or dissociation energy. Dissociation energy. But this energy is to be half. क्यों half? Because we have half Cl2. So dissociation energy divided by 2. Are you getting my point?
should I write here? Half of bond dissociation energy. Clear? Then afterwards we will get Cl single मिल गया Cl. Okay, yes, यही एरो कंटिन्यूड है. Okay, Cl we have got. Cl is in gaseous form. Cl से we have to make Cl minus. So which energy is to be provided? Ionization energy, है ना. Electron is added ना. Here electron is added. तो ये ionization नहीं होगा बेटा. Here electron is added. So what will happen? So it is electron gain enthalpy. You try to understand. Everywhere it is, wherever energy is given, everywhere it is positive. Positive एंडोथर्मिक यानी एनर्जी जब देते हैं तो सब में पॉजिटिव ही आएगा. ये भी पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी. हियर in this case also energy is given, therefore it is positive value. Why? Because bond is broken when energy is provided. But यहाँ क्या होगा बेटा? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये एनर्जी नेगेटिव वैल्यू आएगी. एनर्जी नेगेटिव. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ Cl हैज बिकम Cl माइनस. आयन बन गया Cl माइनस, गैसियस है. दिस Na प्लस gaseous plus Cl minus gaseous will form NaCl. That lattice energy. So last में जो energy release होगी that is known as lattice energy. Now let me explain from the book. So if I am writing here Na solid plus half Cl2 gas is equal to NaCl solid, तो अब इसके energy लिखते जाएं बेटा. Delta H of formation is equal to minus 411.2 kilojoule mole inverse. ठीक है. Then सोडियम से सोडियम गैस बना, so sublimation is there. Okay, so that energy is sublimation energy is 108.4. Okay, किलो जूल मोल इनवर्स कर दो, किलो जूल मोल इनवर्स. देन सोडियम गैस से आयनाइजेशन एनर्जी इज देयर. आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन, सो इट इज 495.6 किलो जूल मोल इनवर्स. So sodium ion is formed. Similarly, if we will go for chlorine, so what will happen? हाफ Cl2 से Cl बनाया, so ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2 था बेटा, तो इट इज डिवाइड जब 2 से करेंगे तो 121 किलो जूल मोल इनवर्स. क्लोरीन बन गया. क्लोरीन से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आई सेड यू कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज, सो इट इज माइनस 348.6. दिस एनर्जी इज minus 348.6 kilojoule mole inverse. Now we will add all these energies. So we will write, and पूरा जो total delta H of formation क्या है बेटा? 411.2. So we will write here minus 411.2. क्यों माइनस है? क्योंकि एनर्जी इज रिलीज्ड. इज इक्वल टू, दिस इज गिवन बाय, इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, सारी एनर्जी को ऐड कर दो टोटल को, सो 108.4 प्लस 121 प्लस 496 माइनस 3 व्हाट इज दिस, ये कितना है? 348.6 प्लस यू. यू क्यों बेटा? क्योंकि you have to add because u is delta H is equal to electron gain enthalpy है, and delta H of lattice is equal to lattice energy. so lattice energy को ऐड करना पड़ेगा. u क्या है बेटा? यहाँ लिखेंगे lattice energy को ऐड करोगे. therefore अगर u की वैल्यू फाइंड करनी है, therefore u is equal to minus 788 kilojoule. The negative value of u shows
that it is a highly stable compound, na? Therefore we will write, therefore delta H of lattice formation is equal to plus 78 kilojoule mole inverse. समझ में आ गया? Spontaneity yesterday थोड़ा सा मैंने तुमको बताया था. Spontaneity of a reaction means having the potential to proceed without assistance of external agency. कोई reaction अगर खुद से होता है, that is known as spontaneous reaction. Like if I tell you some examples, so dissolution of common salt in water, evaporation of water in an open vessel, flow of heat from hot end to cold end. यानी कोई चीज रख देते हैं तो वो अपने आप से cold हो जाती है. That all these occur without any assistance of external agency. So all these are known as spontaneous reaction. The spontaneous reactions are irreversible and they can only be reversed when some external agency is used. ठीक है? Now what is entropy? Entropy is randomness, degree of randomness. If we have one box, partition is there. Here atoms of one gas is there, and here atoms of another gas is there. Let me show with another color. So these are the molecules of gas A and these are the molecules of gas B. Okay. When the partition is opened, they both will be mixed. So let us assume a condition like this, and both the molecules are now mixed. A and B both are now mixed. ठीक है? So now in this, from this अगर one molecule is picked, there is randomness, है ना? There is randomness. The system is now more unpredictable, less predictable. So this is known as entropy. Degree of randomness is known as entropy, less predictable. Correct? This entropy is denoted by S. ध्यान देगा? S is also a state function like enthalpy and internal energy, and it is also independent of path. A system at higher temperature has greater randomness, more entropy. क्यों बेटा? Because gaseous atoms become more mobile when temperature is provided, when they are heated. So randomness will increase. Change in entropy is always proportional to temperature. Change in entropy is always proportional to temperature. So change of entropy depends upon temperature not proportional, it is inversely proportional to temperature. So change in entropy is inversely proportional to 1 upon T. Delta S is proportional to 1 upon T. Change in entropy क्या होगा बेटा? Delta S. So delta S is related with heat. Delta S is equal to Q reversible upon T. In a spontaneous reaction, total randomness is equal to randomness of system plus randomness of surrounding, and it must be greater than 0. ठीक है? When a system is in equilibrium, तो क्या होगा? Entropy is maximum and the change in entropy is 0. Now let us understand the last part, that is Gibbs energy and spontaneity. G is equal to Gibbs energy, नया टर्म आया हमारे लिए, is equal to H minus Ts, where G is an extensive property and is a state function. Okay, it is also known as Gibbs free energy. At constant temperature, delta T will be equal to 0. So delta G of system, that is Gibbs energy, change in Gibbs energy will be given by delta H minus T delta S. So delta G is equal to delta H minus T delta S, same as delta H of the system. So if the value of delta G, Gibbs energy, is negative, then the process is spontaneous. If delta G is positive, then the process is non-spontaneous. What is the relation between Gibbs energy and equilibrium? So A plus B is equal to C plus D, assume a reaction. Equilibrium hai. So at equilibrium, delta G will be equal to 0, delta G of reaction. But standard state to hoga na beta. So but Gibbs energy for a reaction in which all the reactants and products are in standard state, ये जब ऊपर 0 लगाते हैं, that is standard state. So delta Rg is related to the equilibrium constant. So this is already 0 at equilibrium.
delta G of reaction is equal to standard gives energy, change in standard gives energy plus RT ln K. So delta G 0 इधर ले आउट आके is equal to minus RT ln K. So delta G 0 is equal to ln को हटाने के लिए क्या करोगे, 2.303 RT log K. ठीक है. We know that delta G 0 is equal to also given by delta H minus T delta ऐसा भी पढ़ा हमने, is equal to RT ln K. This reaction, this equation we will use in solving the numericals. Okay. So lesson is over. From tomorrow we will start revision and then I will explain you lots of numerical. Thank you.